Hello, welcome back to yet another interesting episode of Let's Talk. आज हम बात करने वाले हैं वेकेशन एंड ट्रैवल की। आप सभी जानते हैं कि इस समय इंडिया की काफी सारी सिटीज में बच्चों की स्कूल की वेकेशन चल रही है और वेकेशन का मतलब है कहीं घूमने जाना और खूब सारी मस्ती करना। हर साल हम लोग काफी सारी जगह घूमने जाते हैं, जैसे हिल स्टेशंस, फॉरेन कंट्रीज, ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे, और लौटते हैं खूब सारी खुशियां और ढेर सारी मेमोरीज लेके। बट इस साल कहानी कुछ अलग ही है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको वर्चुअली एक ऐसी जगह की सैर कराएं जो उत्तराखंड की गोद में बसी है। आज हमारे साथ हैं आलोक राय जी, जो कि को फाउंडर हैं उत्तराखंड मुक्तेश्वर में बसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिसोर्ट द चर्पिंग ऑर्चार्ड के। हाय आलोक, वेलकम टू लेट्स टॉक। कैसा लग रहा है आपको इस शो पे आके? हाय मीनल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। और आप पहले भी आ चुके हैं, आपने देखा है हमारा जगह, राइट। एंड आई हैव बीन थ्रू योर पेजेस जी, थ्रू Kindle Arts and I absolutely love your work and someday I would love to be a part of it as well. Yeah, थैंक यू सो thank मच, you so थैंक यू सो मच आलोक, much. एंड थैंक यू फॉर Yeah, गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटडोर सेटिंग। हम लोग तरस गए हैं इतने सुंदर नेचर को देखने के लिए, बिकॉज इस समय हम सभी घर पे हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, कैसे दिल्ली से लेके मुक्तेश्वर में जाके बस गए आप? yeah. So as you can see मेरे बैकड्रॉप में, जैसा आपने बताया, आपको खूबसूरत लग रहा है, वी हैव प्लम ट्रीज और उसके पीछे इफ आई कैन शो यू वी हैव ओक ट्रीज, राइट। तो ये सारी चीज़ें कीप्स मी ऑल द टाइम मोटिवेटेड। इनफैक्ट हुआ ये कि जो मैं भी आप ही की तरह एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, आई वाज वर्किंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इन बॉम्बे। तो फिर दिस लेसर हिमालयाज ऑलवेज केप्ट मी वेरी मोटिवेटेड। तो फिर मैं इधर आता था घूमने के लिए। आई वेंट ऑन सम एक्सपीडिशंस विद फॉरेस्ट ऑफिसर्स, रेंजर्स, विद सम एनजीओ। तो उससे पता चला कि जो जब हम नेचर को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, एम्पेरिकली अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं अबाउट इट्स बर्ड्स, अबाउट इट्स trees, plants, butterfly, insects. So the entire experience of walking in forest changes. You can just spend hours and hours inside forest and you will not need anyone. You'll have a blissful experience. तो हमने सोचा क्यों ना एब्सोल्युटली, इसको, यस। हाँ, तो मतलब उसकी थोड़ी बैकग्राउंड चाहिए होती, थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है। हमने सोचा क्यों ना इसको हम एक बढ़िया सा एक प्रोडक्ट बनाया जाए, एक एक्सपीरियंस बनाया जाए, सो दैट इट बिकम्स मोर एक्सेसिबल टू पीपल. So hence we created this Chirping Orchard, and I left Bombay and then Delhi, of course, and then I have been settled here ever since. So that's been my Wow, story. that's nice. So what can one expect when they visit you? What are those lovely things that they can expect? या सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हम जिस प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ ले जा रहे हैं। मैं पहले फीचर्स बता देता हूँ अपने इस जगह की, फिर और भी चीज़ें बताऊँगा। तो कार्बन न्यूट्रल में क्या होता है कि जो हम जितना अभी वाटर यूज़ कर रहे हैं, 80% हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टेड है, और इसको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर हम इसको 100% रेन वाटर हार्वेस्टेड कर लें। वो सारा पानी हमारे यहाँ यूज़ होता है, और उसके बाद जो भी आलोक, डिस्चार्ज, या सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आलोक, श्योर, थोड़ा सा नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। यस, नाउ इट इज बेटर। दोस्तों, या किंडल आर्ट्स के सभी जो दर्शक हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, वी आर लाइव स्ट्रेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। तो थोड़ी सी नेटवर्क के इश्यूज हो सकती हैं, बट आप हमारे साथ बने रहिए। ये हमारी एक कोशिश है जगह जगह के ब्यूटीफुल एंटरप्रेनर्स को आपके सामने लाने की। यस आलोक, यू मे कंटिन्यू नाउ। या तो जैसा आपको बताया मीनल ने, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है। एक तो आउटडोर सेटिंग है और हमारे पीछे फॉरेस्ट है, तो नेटवर्क इशू तो रहेगा ही, बट जी, इट्स ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि absolutely। हम अपनी प्रॉपर्टी को कार्बन न्यूट्रल की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसमें हम रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम उसको यूज़ करते हैं, और जो वाटर डिस्चार्ज होता है उसको हम इको एसटीपी से ट्रीट करके हम रीयूज़ करते हैं अपने ऑर्चर्ड में, राइट। एंड वी कॉल आवर प्लेस अ चर्पिंग ऑर्चर्ड। ये है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन। हमारा इनफैक्ट हम जो प्रोड्यूस भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोकल प्रोड्यूस को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वी हैव लाइक 8 to 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग ऑल द टाइम। आवर ऑर्चर्ड हैज़ गॉट 5 to different 6 टाइप्स ऑफ ट्रीज। तो ये एक एक्सपीरियंस है जिसमें आप यहाँ के बैठेंगे, इट विल बी अ गिल्ट फ्री एक्सपीरियंस। आप कुछ भी खा रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी एमिशन, प्लस यू आर सो क्लोज टू द नेचर दैट ओवरऑल ऑरा इज सो ब्लिसफुल। तो ये हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे इनसाइड द प्रॉपर्टी। आउटसाइड द प्रॉपर्टी हम काफ़ी लोकल से भी एसोसिएटेड हैं, हम कुछ एनजीओ से एसोसिएटेड हैं, जिनके थ्रू हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं अपने गेस्ट के लिए। हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारे यहाँ वंडरफुल। लोग आए, या तो रूम में स्टक होके ना रह जाएं, वो बाहर निकलें,
and they see Kumaon Hills. We are based out of Mukteshwar, Nainital, through the eyes of local. तो जिसके लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स निकाले हैं, वी कॉल इट द नयाल विलेज हाइक, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा. हम बर्डिंग हाइक्स कराते हैं, वी आर कमिंग अप विद बटरफ्लाई हाइक्स. तो ये एंड वी हैव गॉट अ टीम ऑफ वाओ! एक्सपर्ट पीपल, वी हैव बीन ट्रेन्ड, हमारे टीम की ट्रेनिंग हुई है और फिर हम ये सारी चीजें डिलीवर करते हैं. तो ये है हमारा और चर्पिंग कैसे ऑर्चर्ड. आपसे लोग किस तरीके से दे कैन गेट इन टच विद यू? हाँ, तो हम वी हैव अ डिसेंट डिजिटल मीडिया प्रेजेंस. हमारा वेबसाइट है, हम सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं. तो ऑल यू नीड टू डू इज़ चर्पिंग ऑर्चर्ड मुक्तेश्वर आपको गूगल करना है और हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा. एंड यू कैन रीच अस एनी टाइम. यू नो वी आर अ स्मॉल प्रॉपर्टी, सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल. That's wonderful. That's wonderful. You are in no way small. I mean, your deeds are really, really great because I think आप sustainability के issue पे काम कर रहे हैं, and through your small endeavors, I think hospitality industry can really contribute a lot in this field. And through your water rain harvesting and solar power and other initiatives, I think you are really making a very, very huge difference through your small endeavor, as you call it. So that's थैंक यू सो wonderful. मच. So what else can people expect when they visit you? If you can tell them more about it. या तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ का एक तो सीज़न है, हम वी आर बेस्ड आउट ऑफ 7,200 फीट की ऊंचाई पे हैं. तो एक तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस. अभी ये फ्रूटिंग का सीजन है, अभी आप हमारे पास आओगे, अभी तो आ नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर अभी आप आते हो तो देयर हार्वेस्ट ऑफ प्लम्स हैपनिंग, देयर हार्वेस्ट सून, एप्पल का हार्वेस्ट होगा, फिर पेयर्स का हार्वेस्ट होगा. तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, Wow. राइट. फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया रूरल हाइक्स के बारे में, सो वी कॉल इट द नयाल विलेज हाइक. तो उसमें क्या है कि जो विलेजर्स देमसेल्फ, स्पेशली विमेन, उन्होंने टीम बनाया है, वो हमारे गेस्ट को हाइक पे ले जाती हैं. एंड दे शो आवर गेस्ट अपना कल्टीवेशन पैटर्न, क्या ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं. उसमें Wow. हैंड्स ऑन Okay. पार्टिसिपेशन भी होता है. वो आपको अपने किचन ले जाएंगे, Okay. स्प्रिंग वाटर सोर्स पे ले जाएंगे, दिखाएंगे कि कहाँ से पानी कलेक्ट करते हैं और उसको थ्राइविंग रखने के लिए क्या कर रहे हैं. आसपास बांध जोक्स लगा देते हैं ताकि वाटर हमेशा उसमें Hmm. अक्यूमुलेट होके रहे. वो आपको अपने मंदिर ले Right. जाएंगे, अपने स्कूल लेके जाएंगे. तो Very ये सारी so चीज़ें, या sweet. Yes. तो एक बहुत ही एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है. ऐसा है कि शायद आपने बचपन में देखा होगा, हमने देखा होगा, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में, दे सो Right. डिस्टेंटेड. Right. या तो ये एक एक्सपीरियंस है. हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पास गेस्ट आएँ और बस खाएँ और सो के चले जाएँ, है ना? एक उनको एक Correct. अपॉर्च्युनिटी Correct. मिलना चाहिए कि कुमाऊँ हिल्स में हो क्या रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं. देयर इज़ लाइफ बियॉन्ड Right. आवर कॉर्पोरेट एंड आवर व्हाट यू कॉल कंक्रीट फॉरेस्ट, एंड दैट लाइफ इज़ ह्यूज. Right. तो वो एक हम विंडो ओपन करते हैं ताकि लोग उसको एक्सपीरियंस कर सकें थ्रू आवर Wow. अगर विलेज. That's so wonderful. And अगर नेटवर्क ने थोड़ा और साथ दिया तो अंत में मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा सा राउंड लगवाएं, कुछ प्लम्स के श्योर, हमें भी दर्शन करवाएं. And let's या see. श्योर श्योर, That's आई विल will डू be a nice way दैट. to end this show. एग्जैक्टली. But we are या not ending it very soon. So आप हमें ये बताएं कि वहाँ के local people. I think you are becoming like a bridge between the nature and the local people and the people staying in the urban India. So you're या connecting them. You're the connecting bridge between the nature and the people, which is kind of missing these days. And you're also offering a lot of experiential platforms or things to them, which is bringing them closer to nature. तो ये या कैसे करते हैं आप और क्यों इसे जरूरी मानते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल मेरा इंडक्शन जो हुआ वो कुछ काफ़ी पैशनेट और क्वालिफाइड लोगों के थ्रू हुआ. कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, कुछ एनजीओ के लोग थे, या तितली त्रासीदार. तो वो जब मेरे को फॉरेस्ट में ले जाते थे तो मेरे को पता चला कि कितना ब्यूटीफुल है ये सारी चीज़ें, है ना. तो अभी भी दे गाइड मी इन डिजाइनिंग द प्रोग्राम्स. तो जैसे मैंने आपको विलेज हाइक्स के बारे में बताया, वैसे हमारा नेचर प्रोग्राम्स है विच इज़ बर्डिंग ओके. हाइक्स. तो आपको उसमें क्या करते हैं हम लोग, हम उसमें आपको पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप जब फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको देखना क्या है ना, और आप देखोगे कैसे. तो 2-4 वॉक्स के बाद यू बिकम वेरी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स. एक भी कॉल अगर आपका बर्ड का आ गया, आप तुरंत उस तरफ सोचने चले जाओगे, है ना. तो ओह ये सारा हम, वाओ. या तो आप अगर इफ देयर इज सम थॉट डिस्टर्बिंग यू, देयर कुड बी लॉट ऑफ थॉट्स कमिंग एट अ टाइम, लेकिन वो जब नेचर का कॉल आता है, बर्ड कॉल या किसी इंसेक्ट कॉल, आपका अटेंशन थोड़ी देर के लिए वहां चला जाता है ना. फिर आपको Really? पता चलता है कि लाइफ इज सो मच मोर बिगर देन आवर पेटी इश्यूज. Absolutely. राइट. या तो इन सारी चीज़ों को इनका टेक्निक होता है, राइट. ये हम इसकी Okay. ट्रेनिंग होती है, इसको इट टेक्स लॉट ऑफ इंटेंसिव रिसर्च टू डेवलप दीज प्रोग्राम्स.
तो ये एनजीओज Wow. हैं और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने डेवलप किया है, बट हमने देखा कि ये अवेलेबल नहीं है लोगों को, इसकी एक्सेसिबिलिटी की कमी Right. है। तो हमने सोचा क्यों ना Right. इसको हम मोर एक्सेसिबल बनाया जाए इसको। तो उनके सहयोग से वी हैव डेवलप्ड दिस प्रोग्राम्स एट चर्पिंग ऑर्चर्ड। तो ये कर This रहे हैं हम लोग। sounds so unique and so different and so exciting at the same time. So I would definitely recommend everyone watching this show and even otherwise to just go and take that experience. Let's see when, but for sure, ये अच्छा, सारी चीजें, it's very meditative to do these things, I believe. आई नो And I एंड can दिस see, I can see a lot of synergies between your mission and what Kindle Arts is doing. So ours is also an experiential platform. Its art is all about de-stressing and meditating. We are also like connecting the guru and the shishya. We are also like serving as a bridge. So I also see a lot of synergies surprisingly here, या and एंड you're दैट्स doing व्हाई a वी आर great टॉकिंग सो job. वेल। या Right. So या wonderful. It's so nice to know about your venture and the beautiful place. And before we start a quick round of chirping orchard, which I'm very very eager to do, and especially now when I have not stepped out for a very long time after out of my house. But before that, can we have a quick round of rapid fire with you? We always do that श्योर, at the end of a show. या Yeah. दैट्स बी So you लवली। ready? श्योर। Okay, that's nice. I like your spirit. Okay. So, Alok Rai, are you ready for the rapid fire? You won't get more than 3 seconds to answer any question, आई एम फुली रेडी, यस। and you need to keep it rapid and full of fire. श्योर, Ready to go? यस, ऑलरेडी। All right. Name 5 citrus fruits. Okay, so we have orange, Malta. We have what do you call lemon, and we can say vitamin C plum, and even Hmm. you can have rose. What do you, and the berries. You know, you have a lot of One berries more, here. one more. So there are two types of berries. so Okay, counting I'll that give that becomes to you. five. I'll give that to you. You know Yeah, fruits much better than we do, yeah. I feel. So great. And rank these in order of your preference: eating, sleeping, traveling, dancing, painting. So I would say traveling, of course, yeah, and then sleeping, and I mean dancing, yeah, and painting, yeah, painting, and eating is Okay, last that's actually. nice. Not Eating very. is last. Yeah, I All eat, but right. I'm not like I don't want a huge platter in front of me. I'm You're happy not a with food. having a yeah. I'm having khichdi or plain things. I can Good, eat a good, lot, good but to know yeah, that. Yes, khichdi yeah, is a very tasty food, by the way. I also like khichdi yeah. a lot. So, sing a song जिसमें nature की बात की गई है. अच्छा, country road, take me home to the plains. I belong West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah Wow, River. really feel Yeah, like, yo, very yes, nice. That was good. Okay, say this fast. She sells yeah. seashell on the seashore. Say it 3 times. She Okay, sells seashell on the seashore. she sells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. That was really Yeah. slow. You cheated, but Okay. I'll give that to you. Okay. Not a problem. All right, take your pick. Sunshine or snow? Sunshine. After living here in Mukteshwar, I would love sunshine a lot. Tea Because or when it's coffee? tea, Selfie or groupie? groupie, always. Sports or music? Music. All right, you did very well, Alok, but there's no hamper Thank, here. We just can give you our good wishes and hope thank the you so best much. for you and your journey and such noble mission that you're working towards. So I, Kindle Arts and me personally wish you very, very best of luck. And if you can take us through Thank you so your much. chirping orchard to get the real feel of your hard work that you've put in this property. Sure, I'm live on laptop, so there'll be a little disturbance, but I can still show. Oh, I see. Yeah. Let's So try. Let's try. yeah. So that you see is actually plum. Those, can you see the fruits here? You have to point it little नीचे. Okay. अभी sky दिख रहा है Here, हमें. Okay, okay. here. Yes, we could see that. Yeah. These are all plums. थोड़ा They're सा not left ripe कीजिए yet. आपका कैमरा. हाँ. Yeah. Could you see Nice. anything? So these are Yes. plums.
and I'll show you more apples. I'll show you. Okay. So it is difficult though. Yeah, here Okay. this is Thank apple. you for trying. I can understand it's difficult to show on a Okay. So laptop for these are sure. apples, if you can see. Oh, yes, these are green By as any of chance, now. could you see the apples? Yes, we could. Yeah. And the lovely And hills yeah, as so well. it's very difficult to walk like this with laptop. Yes, yes, Yeah, and that's our Devdar tree here. yes. It's beautiful. Yeah. Thank you So yeah, so so it's much, very Alok. disturbing. Thank you so much, Alok. It was a Thank you, pleasure talking Nirmal. to you. And thank you for giving us a glimpse of those beautiful mountains. And just like you like sunshine, we hope that your venture sees great lots of sunshines and lots of success in future. So thank you so much for joining us today. Thank you so much, Nirmal. Thank you. See Yeah, you. Bye bye. sure, Bye bye, everyone. sure, sure. Thank you so much. Bye.